You have to. Hello. Hi guys. Can you hear me or see me? Say hello if you can see me. मेरी आवाज़ आ रही है किसी को? अभी मैं फ़ोन से FB लाइव कर रही हूँ और यहाँ बारिश हो रही है बहुत ज़ोर से, ओले गिर रहे हैं. It's raining and thunderstorm and there's no electricity. So we are on this some halogen lights and how do I know that everybody can see me? Any signal? Let's ask my. Can you see her? Yeah, it's working. Can you hear her? It's working. So please say hello to me, write comments so I know you're there with me. I know some of the friends were writing messages on WhatsApp and asking कि आप कहाँ हो. So another opportunity to connect with you all. और जैसे मैं कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि you know we are in tune with nature because 8 बजे ठीक इतनी ज़ोर से यहाँ पे बादल गरजने लग गए, बारिश होने लग गई, लाइट चली गई. So I thought जो हमारा टॉपिक है anger, rage, anger is our life energy. So कहीं existence भी हमें वही दिखा रही है तो हम ट्यून में हैं. सिर्फ network थोड़ा सा उड़ गया. So I was trying with different equipments. So finally I'm here. So as I said, our topic is anger. This is an emotion that we all face in our day-to-day lives, in our relationships. सबसे ज़्यादा दिखाई देता है anger. Our partner is the best person to trigger anger within us. So आपको क्या लगता है? What do you really feel? Is anger good or bad? और जब आपको गुस्सा आता है तो उसके बाद आपको कैसा लगता है? उस समय कैसा लगता है? Are you aware? How do you feel? So let's hear a little bit from you guys. Somehow I don't see the people's comments. Can you see on FB Live? I don't see people writing in their comments and stuff like that. So can you open and check? So I really want you guys to write something to me because it's a two-way interaction. I'm not here to give you any lecture or discourse. I'm just here to share my experiences with you and ओशो ने तो बहुत बोला है and I feel he has been a genius. I mean, he is a genius, of course. He is really okay. Here I need to for the videos. Okay, we can bring Madhu on the. Okay.
It's a very sophisticated phone. So Dimple is there. Rahul, Vikas, Anil, Manju, Madhu, Sudhakar, Subhash. So आप लोग एंगर के बारे में कुछ कहें हमें. What are your views? Do you often get angry or you don't get angry at all? So कुछ लोग मुझे अलग अलग व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस लिखकर भेज रहे थे and I invited them to come to the FB live and talk about bring their questions here. Normally, I see the people's. It's okay. Kaustubh, hi Kaustubh is there. Siddharth is watching. So if anybody wants to come on the camera, I have this feature in my phone, which I can do it. So Subhash is saying, yes, I often get, so give your opinion. Dimple says, I get angry many times and very, very strongly. So as I understand, Osho says anger is your life energy. It's our life energy. We can call it's our sexual energy. And if we repress our life energy, so very often that can turn into anger. And then it can come out as anger because sex repressed, he says, it becomes anger. And anger repressed, it becomes greed. So I hope Dimple, जो मेरा जवाब है वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि हमें गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि कहीं हमने दमन किया हुआ है अपनी जीवन ऊर्जा का, और जितना हम अपनी जीवन ऊर्जा का दमन करेंगे उतना ही वो गुस्से में परिवर्तित होगी. Yes, so repressed sexual energy becomes anger energy. Rahul writes, but then when we look at in bliss and you that after expressing, you feel better and relaxed. Yes. So Sudhakar is saying that when I express my anger, I feel much more relaxed. So that is one of the good ways. Osho says never repress. But at the same time, he's not saying that express it unconsciously, express it on anyone, express it on your children. Often what we do, हम जो हमसे वीकर है, अगर हमें ऑफिस में कहीं गुस्सा आया अपने बॉस पर या हमारे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हुई और हम घर आए, या तो हमने अपने नौकर के ऊपर गुस्सा निकाल दिया या हमने अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा निकाल दिया, हम काफी अनकॉन्शियसली उस गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं. तो ही सेज कि रिप्रेस नहीं करो, बट ही ऑल्सो सेज कि उसको एक्सप्रेस करना है, तो ये नहीं कि आप किसी के ऊपर भी उसे फेंक दो. You dump your anger on anyone, because that is also unconscious. So expression is good, and that is why he created these active meditations, and one of them is Osho dynamic meditation. जो बना ही इसलिए है, he said, let you need to be free of this repressed energy. So cathartic processes उन्होंने create किए इसीलिए, ताकि we have a safe space and consciously we can express that anger. But I am feeling it since childhood. So yes, मैंने ओशो को ये भी कहते हुए सुना है कि जब गुस्सा आता है, और कहीं मैंने पढ़ा भी है कि he says like we are born with anger. As I said, it's our life energy.
और हमारी कंडीशनिंग, हमारे संस्कार, we have this conditioning where we have not lived this life energy naturally. We are not allowed. No child is allowed. There's so much, don't do this, don't do that, don't go there, sit down, don't jump. So when this energy is repressed so much, um, so what it gets accumulated in our system. कहीं वो हमारे अनकॉन्शियस में जाके छुप जाती है, एक दीमक की तरह, एक पॉइजन की तरह हमारे सिस्टम में काम करती है. तो एक अच्छा तरीका है for a seeker, for a meditator, is to go to the root of this anger, to really go back and see कि ये गुस्सा कहाँ से आया, कहाँ वो जड़ है इसकी, जहाँ ये ट्विस्ट आ गया, जहाँ मैंने रिप्रेस कर दी अपनी लाइफ एनर्जी. और अगर हम इसकी जड़ तक, अगर हम इसकी रूट तक जा पाएंगे तो इससे फ्री होने में हमें बहुत आसानी मिलेगी. We will be able to be free from it, and we have all the tools and resources that OSHO has given us. And in the end also I will share a small meditation with you, which also I have shared on the BLISS channel, breaking the patterns of anger. So जो आप practice कर सकते हैं. At the same time, जहाँ मैं कह रही हूँ कि हम रूट पे जाएं, वहाँ अगर हमारी सजगता, अगर हमारी अवेयरनेस और कैपेसिटी टू विटनेस दिस एंगर, और वो सिर्फ मेडिटेशन से आएगा, अगर हमारी वो कैपेसिटी को हम बढ़ा लें, तो कहीं हम जैसे कहते हैं कि डिसआइडेंटिफाई योरसेल्फ फ्रॉम द एंगर. अगर हम जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं अपनी इस इमोशन को, हमें गुस्सा आ रहा है, उसके पहले ही हमें सजगता आ जाए कि अंदर कुछ बॉयल हो रहा है. ओके, अब मुझे गुस्सा आ रहा है. इफ आई ब्रिंग दैट अवेयरनेस, तो एक चीज क्या होगी कि हम उसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपनी बॉडी में, पर हम उसे किसी पे फेंकेंगे नहीं और ना ही हम उसे रिप्रेस करेंगे. सो वो कैपेसिटी हम डेवलप कर पाएंगे ओनली थ्रू मेडिटेशन. A disidentification with our emotions, and that is what meditation is all about. Kamalji, my mom is also there. Hi, mom. Arvind, Mahesh, Rahul. Rahul is asking something. Is anger sometimes is not a useful tool? For example, some this and you need to fight back. Is anger sometimes not a useful tool? Yes, I'm not saying that anger is bad. I mean, ये भी एक हमारी conditioning है कि कहती है कि गुस्सा बुरी बात है. Unconsciously dumping the anger is bad, I would say. But anger, as per, is our pure energy. और अगर हम सबको गुस्सा करना चाहिए, मैं कहूँगी हम सबको उस गुस्से की एनर्जी को फील करना चाहिए, उससे रिप्रेस किए बिना. और अगर हम उस एंगर को टोटली फील करेंगे तो हम we are very alive in that moment. You're right. And sometimes anger is good in a way to assert yourself. You need to be assertive. So there is a little bit difference between assertion and anger. So when I say, you need to assert yourself, but the only difference is if you're conscious what you are doing. और अपनी जीवन ऊर्जा, अपनी लाइफ एनर्जी को फील करना तो बहुत ही अच्छी बात है. तो गुस्से को एक रॉ एनर्जी के रूप में फील करना, उसे एक्सप्रेस करना in a positive way, that's very good. And that brings you back into your body, and that shows that you're alive. आप dead नहीं है. Subhash is asking, suggest which meditation it is advisable in this time. As I said कि ओशो ने हमें बहुत
साइंटिफिक तरीके से उन्होंने हमें ये टूल्स दिए हैं जहां हम इन इमोशंस का वर्कआउट कर सकते हैं, जो माइंड बॉडी सोल तीनों लेवल्स पे काम करते हैं. सो उनमें से एक है ओशो डायनामिक मेडिटेशन. osho.com पे इसके आपको वीडियोस और डेमोन्स्ट्रेशंस मिल जाएंगे. एंड इफ यू हैव अ ओशो सेंटर in your city, you should visit that as COVID is going away. या ऑनलाइन आप इस मेडिटेशन को सीख कर सकते हैं. It's a very very good tool जिसमें first stage is chaotic breathing. और जब हम chaotic deep fast breathing करते हैं तो अंदर जो भी हमारे पैटर्न्स हैं, सोचने के तरीके हैं, जहां भी ब्लॉक्ड एनर्जी है वो खुलती है. और उसके बाद second stage is about becoming mad, expressing consciously. He says you go mad for 10 minutes, you express everything that is repressed. And the third stage is who connecting with your sexual energy, letting that energy rise up. And then comes stop stage, where your awareness, your witnessing goes to a crescendo, and then you end the meditation with celebration and dance. So this is a very recommended meditation for managing your anger and transforming your anger. So as I said, don't repress but transform this energy. Use it creatively. कहीं आप अपनी life energy को creatively यूज नहीं कर रहे हैं, इसके लिए और एक मेडिटेशन है जिब्रिश मेडिटेशन. अगर आपके पास 1 घंटे का समय नहीं है डायनामिक के लिए, so you can always do gibberish, at least 15 minutes of gibberish. Gibberish means talking in a language that you do not know, a nonsense language, and really expressing जो भी आप किसी को कहना चाहते हैं वो आप gibberish के द्वारा कहें. और then the next 15 minutes you sit silently. Many questions coming. Often witnessing the anger turns to subtle controlling. That's a very good observation, I must say. We can control our anger, and our mind can fool us and say, oh, I am witnessing it. I would say कि इसका सबसे अच्छा benchmark है if you stay connected with your body, because जब भी आपको गुस्सा आता है आपकी बॉडी में इसका रिएक्शन होता है, आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल हो जाती है, और मे बी यू क्लेंच योर जॉज. यहाँ आपको कहीं ना कहीं बॉडी में एंगर फील होता है और आप मुट्ठी बांध लेते हैं, यू क्लेंच योर फिस्ट, या स्टमक गेट्स टाइट. So there is always some reaction of this emotion in the body. So stay connected with your body, and if you are really in the witnessing stage, the body will relax naturally. So that will be the key for you, that you are witnessing or controlling. So if you're, according to me, if you're present in the body, that will give you a benchmark. And I would say that, we all are not, we can witness to a point. I can say it about myself, but active meditations really help. So I really recommend that you do these active meditations, and don't get into spiritualizing. As I said about witnessing, it will come naturally, and you will know, your awareness will know, now I'm witnessing it. So keep an active meditation in your daily routine. It's like a medicine. Okay, let's see, there are more questions. So many of my friends are here. Vandana, Nancy, Deepa, really nice to see you all here. Lots of hearts, yes. So और कोई questions जो मैंने miss कर दिए हों? Can you see more questions? You can't see because I'm talking and I'm trying to watch.
And often, you know, when we talk about depression, depression is also like a negative state of anger. You know, when our anger, we are not allowed, और जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा हमें अलाउ नहीं करती है एक खुला जीवन जीने के लिए, तो हमें एक आदत हो जाती है कि हम इसको बहुत बहुत सालों तक जब हम इसे रिप्रेस करके रखते हैं अपने अनकॉन्शियस में, तो कहीं कहीं पे ये डिप्रेशन, यू नो, energy becomes so pressed that it turns into depression. Please change the angle of the light. As I said कि यहाँ इतनी बारिश और तूफान आया कि light नहीं है. I have some, and you know, this light around me, उनको shadows दिख रही हैं शायद मेरे face पे somebody is writing, even when I'm smiling. You can get angry. So, Anand, Sudha, Arun. So now maybe it's time to do a small, I like to share one more small technique which you can always practice. Osho calls us changing the patterns of anger. And ये आप खड़े होकर बैठकर किसी भी समय दिन में कर सकते हैं. एटलीस्ट यू डू इट फॉर 15 मिनट्स. आप अपनी घड़ी में अलार्म लगा लें 15 मिनट का. और जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हैं जो आपको गुस्सा दिलाती हैं, और गुस्सा क्या है? गुस्सा ये है कि आपकी कोई डिजायर फुलफिल नहीं हुई, आप जैसा चाहते थे वो नहीं हो रहा, तो हमें गुस्सा आ जाता है. हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स में आपने कुछ एक्सपेक्ट किया हो किसी से और वो आपको नहीं मिल रहा, तो आपको गुस्सा आता है. या आपने लाइफ से एक्सपेक्ट किया हो कि मुझे ये मिलना चाहिए. आपकी कोई भी डिजायर, इफ एनी ऑफ योर डिजायर इज लेफ्ट अनफुलफिल्ड, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू गेट एंग्री. It's as simple as that. And due to our not knowing, we carry this anger for years. You know, I have a friend, you know, who often shares when he was 8 years old, his parents didn't buy him a bicycle. तो उसका गुस्सा, अब he's 36 years old, he's still carrying in himself. How many years have passed? Just one incident of your life can just totally, you know, shape the course of your life. So these are some of, I really invite you guys to use these tools that Osho have given us, these active meditations, so you can really let go of these emotions that you are carrying in your body mind system. So changing the patterns of anger. So, you know, you take your own space, set up your alarm, 15 minutes, you go into these situations of your life जब आपको गुस्सा, जो आपको गुस्सा दिलाती हैं, जिनसे आप इरिटेट होते हो. मे बी कुछ लोग हैं आपकी जिंदगी में, जो भी सिचुएशंस हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है. Things are not happening the way you want to, and then you start feeling them in your body. फिर उसे अपने शरीर में महसूस करें. But remember, आपको express नहीं करना है इस टेक्निक में. It is different. You just consciously feel it in the body. और देखें कि आपकी बॉडी किस तरह से उसको रिएक्ट कर रही है. अपना हो सके तो आप you clench your jaws, your fist, but आवाज नहीं करें. You know, you don't make a sound. You know, you contract your body. Maybe you contract your belly, your stomach area, and you really feel this anger energy inside your body. उसको महसूस करें. जैसे पानी 100 डिग्रीज पे बॉयल होता है, उस एंगर की एनर्जी को, उस हीट को अपनी बॉडी में महसूस करें. You know, for 15 minutes you do that, and then feel it, feel it, feel it, feel it building up, building up, building up in your whole body.
but don't make sound, don't express. And then after 15 minutes, as the alarm goes, and then you totally let go. Relax and sit quietly for at least 5 minutes, just watching whatever is happening. And Osho says, अगर consciously ये हम 2 weeks तक करेंगे, तो जो ये anger की energy हम अपनी body में feel कर रहे हैं, that heat is going to melt away all the blocked energies. It will change all those knots जो हमारी body mind system में आ गई हैं. It will melt away, and this anger energy will naturally get transformed. And anger, when transformed, the other side is love, compassion. हो सकता है जिन लोगों पर आपको बहुत गुस्सा आता हो, फिर उनको आप करुणा की नज़र से देख पाएं और एक्चुअली फील कर पाएं उस करुणा को. और ये कहीं मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. दिस एंगर एनर्जी कैन रियली गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लव एंड कंपैशन. Yes, Arun is saying that he was doing breathing exercises and channelize. As I said, breathing is one way. Dynamic meditation is the best with breathing and catharsis. Gibberish is also involving catharsis and body movements. That's another way. Kundalini, shaking your body, is another active meditation given by Osho. And this short technique, which I said, in which you don't express. So that's the key. It's a different way to transform this energy. And often doing some physical activity, you can just go for a jog or a run. And when you feel angry, and you will see this energy will get channelized. Or you could do gardening, connect with the earth, do something active and express your energy creatively. And once you express your energy creatively, there's a kind of fulfillment that comes, there's a kind of joy that will come, and then the anger energy is naturally transformed. और ओशो एक कहानी भी सुनाते हैं. वो कहते हैं कि अगर किसी पे बहुत गुस्सा है तो 24 घंटे का टाइम आपको देना चाहिए. आप किसी को बहुत कुछ गुस्से में कहना चाहते हैं, कहीं अपने आप को रोके, कहें कि मैं कल कहूंगा. And you will notice after 24 hours naturally वो गुस्सा खत्म हो जाएगा. This energy will be transformed. Can there be a, Sandeep पूछ रहे हैं, can there be a short technique of breathing to transform energy of anger? मैंने एक शॉर्ट टेक्निक तो अभी संदीप बताए आपको, चेंजिंग द पैटर्न, जिसमें आप गुस्से को पूरे शरीर में महसूस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फुल फील करते हैं उसको कॉन्शियसली, और वो अपने आप बदल जाता है. और ऑफ कोर्स ब्रीदिंग की कुछ प्राणायाम और कुछ योगिक टेक्निक्स होंगी. मुझे ओशो की जो टेक्निक है वो तो डायनामिक मेडिटेशन के बारे में पता है, रैपिड फास्ट ब्रीदिंग और फिर कॉन्शियस एक्सप्रेशन. बाकी शेकिंग है ओशो कुंडलिनी मेडिटेशन में, जिब्रिश मेडिटेशन है. आई थिंक ये 3-4 रिसोर्सेज अगर आप यूज करेंगे तो ये काफी हैं. Hi, Ru is there. Vesa from Finland. Hi, Vesa. Nice to see. Vikram Tejinder Pal Singh, he's there. Hello. I don't know if he's in Gujarat or Amritsar right now. So, any more questions? नहीं तो फिर हम अलविदा कहते हैं. I don't know what's the time now. Yes, Arun is saying, Osho says exhaling is the best way to release the anger. And this is a very rightly said, Arun, ki, I mean, some deep exhalations in that moment can really change your energy. You can, instead of,
putting it on someone, you can go and do deep exhalation that will very well support you, and maybe that answers Sandeep question also. What to do when already triggered by anger at that very time? At that very time? Every time? उसी टाइम पे कैसे क्या करें? उसी समय जब एकदम गुस्सा आ गया है तो क्या करना है? सबसे पहले तो उसे देखना है साक्षी बनकर, ये फाइनल आंसर है। पर अब साक्षी नहीं बना जाता तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, एक तकिया उठाया और बॉक्सिंग शुरू कर दी उसके बाद, गुस्सा किया और निकाल दिया उसको। एक तो ये तरीका है। या फिर गए और जोर जोर से बाहर डीप एक्सलेशंस करने लग गए, एक वो तरीका है। सो ये दो तरीके आप आजमा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स और लोग शेयर कर सकते हैं, जैसे अरुण इज शेयरिंग कि आप लोगों का क्या अनुभव रहा है, यू नो व्हाट हैज हेल्प्ड यू when you've been angry at times and you thought, oh my god, I didn't put it on anybody, I didn't repress, I did something great, you know, I was very mindful, I managed my anger well. So I would like to hear, you know, people who want to share some of the incidents. You're most welcome to share. और अगर कोई आना चाहे कैमरा में और बताना चाहे वो इंसिडेंट, very short and sweet, so I can bring you also on the live video. If you want to share a situation in your life and you felt that you really did a good job managing your anger, you saw it, you transformed that energy. As I would say, like, it's your creative energy which is not being expressed. It's your life energy which is not being expressed. So, you know, do work, be more creative in your life. If you're more creative, you'll be less angry. Yes, आनंद सुधा इज सेइंग कि तकिए के साथ रेचन करना अच्छा हो सकता है। वो तो है ही अच्छा, एक बहुत ही सिंपल तरीका है। या हो सके तो आप एक पंचिंग बैग रख सकते हैं अपने घर में, जिनको ज्यादा गुस्सा आता है, और रोज सुबह आप थोड़ी बॉक्सिंग कर सकते हैं उस पंचिंग बैग पर। Yes, Dimple also says that beating pillows helps a lot, and also, like, you know, a good scream. अगर आप एक स्पेस मिल पाए, अगर आपको आपके घर में या कहीं चले जाएं, आप नेचर में बीच पे रहते हैं तो बीच पे या जंगल है आसपास, और जहाँ के जोर से चिल्लाएं, really from your guts, from the belly. A good scream is so freeing and it's so good. और वो एक कनेक्शन भी देता है आपको आपकी पावर से। सुरेशु कह रही कि जब तक किसी पे गुस्सा नहीं करो तो सेटिस्फैक्शन नहीं होता। मैंने कितनी बार कंट्रोल करने की कोशिश की पर कहाँ चला गया, पर देखो, कंट्रोल करने की कोशिश है आप गलत कर रहे हो रेशो। आपको कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि जब आप कंट्रोल कर रहे हो तो कहीं आप कुछ दबा रहे हो, है ना। और मुझे पता नहीं आप डायनामिक करते हो या नहीं, मुझे ये पता है कि आपको पता है डायनामिक मेडिटेशन क्या है। तो अगर आप अपने आप को कहें कि मैं ये 3 वीक्स टोटलिटी से मैं डायनामिक करूंगी, वो 10 मिनट मैं पूर्णता से मैं रेचन करूंगी, तो जरूर किसी और पे निकालने से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और कंट्रोल नहीं करना है,
कंट्रोल नहीं करना है, वही एक गलत हमारे अंदर एक वायरिंग बनी हुई है कि हमें कंट्रोल करना है और फिर निकाल देना है किसी पे। कोई भी सिचुएशन छोटी सी होगी और वो भड़क उठेगा। सो थोड़ी और अवेयरनेस लेके आनी है, एंड आई रियली रिकमेंड जिब्रिश और डायनामिक। Make it a part and say this is my commitment. At least for 3 weeks I want to do it, and then you will see there will be a change, there will be a difference in your life. And as I said, there's also another way to go to the root of it. Once you get more aware, आप डायनामिक करेंगे, आपको अपने आप पीछे पीछे जाके दिखाई देगा कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे वो नॉट बनी। तो ये जो पैटर्न है बार बार निकालने का, वो टूटेगा। So Rahul finds being watchful has been always been helpful for him. That's really good. So meditation always helps you to, ultimately आपका watching capacity, आपकी witnessing capacity, आपका disidentification बढ़ जाता है। Dimple is asking, is it possible that we carry anger from the past lives? Why not? We may be carrying from lives and lives and lives. It can be accumulated, as we said. अगर आप बहुत गहरे अपने पे काम कर रहे हैं तो definitely you can go back to those points when this anger got created. And end में OSHO always says, like, don't take life seriously. और कभी आपको गुस्सा आता भी है तो डोंट बीट योरसेल्फ अप, अपने आप को गिल्ट ट्रिप कभी नहीं करें कि अरे मैं तो इतने गुस्से वाली इंसान हूँ, तो वो भी आपकी ईगो वहां भी पकड़ लेती है आपको। इट्स ओके। I heard Osho saying once, he said, like, कभी आपने किसी पे गुस्सा निकाल दिया और कर दिया, ठीक है, आप उससे जाके माफी मांगे, इसलिए नहीं, डोंट गिल्ट ट्रिप, डोंट बी सेल्फ क्रिटिकल अबाउट योरसेल्फ. Just say, don't say I'm sorry that I got angry with you. He said rather you change it and say I'm sorry that I was unaware. I was unaware about it. So he's always saying, like, bring awareness. So jahan bhi main unaware raha, be sorry about that. It's okay अगर आपने गुस्सा कर लिया तो. So friends, I'm really happy sharing all these things. मजा आ रहा है सब लोगों की बातें सुन के और ये शेयर करके. सुधी, भाविका, उमा, रोहित, कार्तिक. So I think it's time to say goodbye. It's almost half an hour that we started. I'm happy that I could do it. Seeing the weather and the situation, I thought maybe I cannot make it today. So enjoy your life energy, live your life energy consciously. यही कहना चाहूंगी, and thank you for being here, thank you for listening to me, sharing your thoughts. Dinesh is asking, gibberish, I already said gibberish is very good tool to manage your anger. So I hope to see you guys again sometimes next month. And I hope कि जो भी मैंने tools बताए वो आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, है ना? I hope they are helpful for you, and
Please share with me how was it? How are these FB Live videos for you? Do you enjoy? और कुछ भी आप शेयर करना चाहें, you're most welcome to write to us. Okay, friends, so I'm saying goodbye. Thank you. Uh, namaste. I love you all. Goodbye.